Don't worry, we are in this material world. That is even more embarrassing. मेरा पानी का बोतल देना, उधर से तेज गोरांग देख पीछे स्मार्ट वाटर फॉर स्मार्ट पीपल. Where is कल कृष्ण प्रेम तरंगिनी माता जी, दिव्यानंदी राधिका माता जी, इतने बड़े, you know, I made a huge mistake by suggesting names. मैंने ही ये नाम सजेस्ट किए थे. कृष्ण प्रेम देवीदासी कितना सिंपल था. मेरी ही ज्यादा वाइडो बनवानी इच्छा थी. कृष्ण प्रेम तरंगिनी दिव्यानंदी देवीदासी, लाइक दिव्यानंदी राधिका देवीदासी. अच्छा हुआ महाराज ने धीर ललित प्रभु को धीर ललित प्रभु नाम दिया. मैंने तो दमश्र कलार कराल नरसिम्हा दिया था. I know, दमश्र कराल नरसिम्हा. महाराज लग जा रहे. महाराज like, what is this? Who, धीर ललित प्रभु? Yeah. Yeah. Externally he's calm, yes. Huh? Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Jamuna Tirat Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. हरिनाम संकीर्तन की, श्री प्रभुपाद की जय. लास्ट संडे माधवेंद्रपुरी का अपीयरेंस डे था, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी. तो माधवेंद्रपुरी को जो नहीं जानते उनको एक संक्षिप्त में बता देते हैं. माधवेंद्रपुरी कौन थे? माधवेंद्रपुरी जैसे चैतन्य महाप्रभु थे,
हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु, उनके गुरु ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी मध्व संप्रदाय से थे और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने से उस लाइन में नाम पड़ा मध्व गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए हम क्या कहलाते हैं? मध्व गौड़ीय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो ये माधवेंद्रपुरी के ग्लोरिफिकेशंस में आज जो टॉपिक है, द स्टोलन स्वीट राइस स्पॉट, क्षीरा, ये आज माधवेंद्रपुरी के स्मरण में ये टॉपिक आज का चूज किया गया है। तो माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी नाहं तिष्ठान्ति वैकुंठे नाम योगिना हृदयेशा यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मतलब नाहं तिष्ठान्ति वैकुंठे योगिनां हृदयेशिना यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। Another way, नाहं वसति वैकुंठे। हाँ, वसति बोला तो पता चला, नीदर डू आई रिसाइड इन, मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता। नाहं वसति वैकुंठे योगिनाम हृदये स्थिना, योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता। यत्र मद्भक्त गायन्ति, जहां पे मेरे भक्तों के चरित्र का वर्णन होगा। यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र उस जगह पे मैं बसता हूं नारद। तो कई बार एक आध बार के लिए से बोल सकते हैं कि भगवान शायद वहां ना आए जहां पे उनका स्मरण किया जा रहा है एक बार के लिए, पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे भगवान के भक्त के चरित्र का वर्णन और भगवान ना आए। जैसे प्रहलाद महाराज के चरित्र में भगवान आते ही आते हैं, नरसिंहदेव साक्षात अवतार लेकर आते हैं। महाप्रसाद क्षीर लोभे, एवरीवन सेटल्ड? महाप्रसाद क्षीर लोभे रहिला प्रभु तथा पूर्वे ईश्वर पुरी तांद्र कहिया छे नह कथा। The Lord remained there because he was very eager to receive the remnants of sweet rice. महाप्रभु उधर बसे, कहाँ पे? गोपीनाथ मंदिर की बात हो रही है। गोपीनाथ मंदिर में महाप्रभु रुके क्योंकि उनको खीर खाने की बहुत इच्छा थी। और तब महाप्रभु ने कहा कि मुझे ईश्वरपुरी मेरे गुरु ने कथा कही थी, मैं आप सबको वो कथा कहना चाहूंगा। क्षीर चोर गोपीनाथ प्रसिद्ध ताम्र नाम, भक्त गण कहे प्रभु सेता आख्यान। वो विग्रह का नाम है क्षीरचोर गोपीनाथ। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से कहा, मैं आपको बताता हूं कि ये इतने प्रसिद्ध कैसे हुए और इनका नाम क्षीरचोर क्यों पड़ा है। पूर्वे माधव पुरियरा लागे क्षीरल करी चूरी, आठ एव नाम हैल क्षीरचोर हरि। पूर्व मतलब पहले माधवेंद्रपुरी के लिए इस ठाकुर ने क्षीर चुराया था। ऐसे तो इनका नाम गोपीनाथ है, परंतु माधवेंद्रपुरी के लिए क्षीर चुराया, इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? क्षीरचोर हरि, क्षीरचोर गोपीनाथ। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम गिविंग क्लास रुक्मणी, आई एम गिविंग क्लास। लाइव हूं मैं, देख लेना, लाइव हूं यूट्यूब चैनल पे, देख लेना। हाँ पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरि गोवर्धन। अर्थात कोई तो बताओ अर्थ इसका।
इतना सिंपल तो है। मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्वे श्री माधवपुरी आयला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धन। पूर्वे एक समय की बात है जब माधवेंद्र पुरी वृंदावन आए थे, और भ्रमिते भ्रमिते मतलब घूमते घूमते भ्रमण करते करते कहां पहुंचे? गिरी गोवर्धन। माधवेंद्र पुरी जब गिरी गोवर्धन पहुंचते हैं, तब वहां पे वो गोवर्धन को साष्टांग दंडवत करते हैं और परिक्रमा करते हैं। और माधवेंद्र पुरी परिक्रमा करते 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 एक मस्त पेड़ की छावनी में नीचे बैठकर वो नाम जप करने लगे। उनका सुध बुत नहीं था कि वो जैसे सन्यासी मधुकरी करके जो भी मिलता है वो स्वीकार करते हैं, पर माधवेंद्र पुरी के उनके परमहंस, परमहंस अर्थात जो आता है सामने से, अगर कोई कुछ प्रसाद देता है तो खा लेते हैं, वरना वो फास्ट ही करते हैं फिर। तो माधवेंद्र पुरी बैठे हुए थे उधर अच्छे से, और उनको किसी ने कुछ उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने अपना परिक्रमा किया अच्छे से, उधर बैठ के नाम जप करने लगे। फिर एक छोटा सा बालक आया, एक बड़ा सा घड़ा दूध का भरकर, बहुत मधुर दूध। और माधवेंद्र पुरी को उस बालक ने वो दूध दिया और कहा कि लीजिए आप इस दूध का सेवन कीजिए। कि आप कौन है? बालक ने पूछा। माधवेंद्र पुरी जब उस बालक को देखते हैं, तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी से चैतन्य चरितामृत में कि वो बालक का सुंदरता इतना मधुर था कि माधवेंद्र पुरी की तृष्णा एकदम शांत हो गई। मतलब ऐसे भी उनको आध्यात्मिक तौर पे तो उनको भूख नहीं लगी थी, पर आध्यात्मिक तौर पे जो भूख थी वो भी शांत हो गई वो बालक को देखकर। इतने सुंदर बालक थे वो। तो फिर माधवेंद्र पुरी को पूछते हैं कि बालक आप कौन हो? तब वो बच्चा जो होता है, वो बालक होता है, बोलता है कि मैं गोप कुमार हूं, मैं गोप हूं, और ये मेरा गांव है, मैं इस गांव का रहने वाला हूं, और हमारे गांव में कोई भी भूखा नहीं सोता। कि मैं मेक श्योर करता हूं कि जो भिक्षा मांगते हैं उनको भिक्षा मिले अच्छे से भरपेट, और जो नहीं मांगते हैं उनको भी खाना मिले। मैं इसका ध्यान रखता हूं इस क्षेत्र में। इसलिए मैं आपके लिए दूध लेकर आया हूं। ये दूध सामने वो आपको दिख रही है, जो गोपियां खड़ी हुई है, जो गाय का दूध निकाल रही है, वो गोपियों ने ये दूध मुझे लेकर भेजा है कि आपके पास मैं लेकर आऊं इस दूध को। माधवेंद्र पुरी ने वो दूध पिया। वो दूध इतना अच्छा था, जैसे माधवेंद्र पुरी ने कभी ऐसा दूध पिया ही नहीं था। और वो फिर से नाम जप करने लगे। नाम जप करते 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 करते, और वो बेटा, वो जो बच्चा था, वो दूध देकर चला गया वहां से कि मैं वापस आऊंगा ये मटका लेने के लिए। तो माधवेंद्र पुरी ने वो दूध पिया। दूध पीते पीते नाम जप करते करते संध्या हुई। संध्या के बाद थोड़ा रात्रि का समय हुआ और उनको नींद लग गई और वो सो गए। सोने के बाद स्वप्न देखी से बालक सम्मुखे आशिना, एक कुंजे लाना गेला हाते ते धरिणा। In the dream, Madhavendra Puri saw the same very boy. The boy came before him and holding his hand took him to a bush in the jungle. कुंज देखे न कहे आमी, ए कुंजे रही, सीता वृष्टि वातंगित महादुखी पाई। मतलब जंगल जैसा, बुशेस जैसा पूरा गहरी झाड़ियां थी, और झाड़ियों में सपने में ये हो रहा है। वो बालक लेकर गया है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे बस डटा हुआ हूं, मैं यहाँ पे गड़ा हुआ हूं बहुत नीचे, कि बहुत सालों से भी उसमें मुझे बहुत धूल जमी है, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, प्यास भी लगी है, गर्मी भी लगती है, बहुत ठंडी भी लगती है। तो माधवेंद्रपुरी एक काम करो, यहां से तुम मुझे बाहर निकालो। कल सुबह तुम उठकर ही सारे के सारे गांव वाले को इकट्ठा करना, और सभी गांव वाले को बोलना कि अपने अपने औजार फावड़े वावड़े सब लेकर आए, और यहां से मुझे बाहर निकालना है। वो ही सुनकर, उतना बोलकर वो बच्चा बालक सपने में से विलुप्त हो गया। इसके बाद माधवेंद्र पुरी की नींद टूटी। He got rattled and baffled.
कि मतलब वो लड़का साक्षात गोविंद था और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। वो बहुत विलाप करने लगे। पर विलाप करने के बाद कहीं होता है ना, जैसे कि डिवोटीज में होता है, बहाव पे बहुत ज्यादा स्तरण के बाद तुरंत रियलाइजेशन होता है, एक सेकेंड, मिशन बाकी है अभी, बाद में भी विलाप करेंगे, अभी मिशन है क्या? क्या मिशन है? बाहर निकालना। हाँ, सिंपल। कि वो जो झाड़ियों में जो विग्रह है उसको बाहर निकालना है। वो बालक ने क्या बोला कि ये जो विग्रह है, ये विग्रह का नाम भी बताया, श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, व्रजेर स्थापित आमी इहान अधिकारी। मेरा नाम क्या है? गोपाल, गोवर्धन धारी। श्री गोपाल नाम मोर गोवर्धन धारी, व्रजेर स्थापित आमी इहान अधिकारी। व्रजेर स्थापित अर्थात क्या? वज्रेर, सॉरी। हाँ, कि मेरी स्थापना पूर्व में वज्रनाभ ने की थी। किसने की थी? वज्रनाभ कौन थे? किन किन को पता है? बट हु वॉज ही? हुज ग्रैंडसन वॉज ही? ग्रेट ग्रैंडसन। ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा, एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ उत्तरा उन्होंने वो विग्रह का कार्विंग करवाया था स्थापति से, क्योंकि उस समय पे केवल उत्तरा ही ऐसी जीवित व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्णा को फेस टू फेस देखा था। तो वज्रनाभ ने ये जो विग्रह थे इसको उत्तरा के गाइडेंस में कार्व करवाया था, कि कैसे कृष्ण की आंखें थी, कैसे कृष्ण के होठ थे, नाक थी, इत्यादि सारे के सारे अंग, और जब उन्होंने गोवर्धन उठाया था तो वो कैसे लग रहे थे। वज्रेर स्थापित इहान आमी इहान अधिकारी। आई एम द ओरिजिनल किंग ऑफ दिस गोवर्धन। गोवर्धन क्षेत्र का राजा मैं हूं, अधिकारी मैं हूं। शैला उपारी हाइते आम कुंजे लुकान, मलिच्छ भय सेवक मोरा गेले पालान। मैं यहाँ पे मेरी भव्य तरीके से पूजा हो रही थी, परंतु जब मलिच्छ और यवना मतलब मुसलमान राजों ने हमला किया था, इस्लामिक टेररिस्ट ने जब हमला किया था, तो मेरे सेवकों ने मुझे यहाँ पे अच्छे से छुपा दिया था झाड़ियों में, और सब यहां से चले गए थे ताकि मुझे कोई खंडित ना कर पाए। पर अब समय है कि माधवेंद्रपुरी कि तुम मुझे बाहर निकालो और तुम मेरी सेवा यहां से वापस प्रारब्ध करो, प्रारंभ करो। After saying this, boy disappeared. That Madhavendra Puri woke up and began to consider his dream. फर्स्ट थिंग ही डिड, वो लेमेंट करने लगे, विलाप करने लगे कि मैं भगवान को कैसे पहचान अब तक नहीं पाया कि साक्षात कृष्ण थे। सोबर अप हुए अच्छे से, एकदम पूरी तरह से। चलो विलाप बाद में करेंगे। सुबह सुबह उठे, जोर जोर से चिल्लाया, सारे गांव वालों को बुलाया, सुनो 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 सुनो, मुझे एक सपना आया है कि यहाँ पे झाड़ियों में गोपाल नाम के विग्रह है और उनको बाहर निकालना है, भगवान का एक विग्रह है। सभी के सभी पूरे के पूरे गांव वाले थे, सब फावड़ा फावड़ा बावड़ा सब खुदाई का सामान लेकर आ गए, खुरपी वुरपी झाड़ियों को काटने के लिए सब कुछ लेकर अच्छे से आ गए। किसी ने भी प्रश्न नहीं किया। दिस इज वृंदावन मूड। एवरीवन इज रेडी इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। दिस इज वृंदावन मूड। एवरीवन इज रेडी टू सर्व एनीथिंग फॉर कृष्णा एंड everything for Krishna. There are only two Siddhanta. Prabhupada said it, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had said it, Bhakti Vinod Thakur has said it. One Siddhanta. Nutshell में, एकदम nutshell में कहीं ना दो ही लाइन है। Always remember Krishna. पहला सिद्धांत। And दूसरा सिद्धांत, never forget Krishna.
सिद्धांत नंबर 1, ऑलवेज, जोर से बोलो। नंबर 2, नेवर फॉरगेट कृष्ण। कृष्ण को हमेशा याद रखो और कृष्ण को कभी भी विस्मृत मत होने दो। The proprietor of this village, Govardhan Dhari, is laying in the bushes. Let us go there and rescue him from that place. सभी ने बहुत मेहनत की, झाड़ियों में डीप गए तो फाइनली उनको ठाकुर देखिला माती त्रिणया चाडिता देखी सब लोक हैला आनंदे विस्मिता। जैसे ही सबने देखा ब्यूटीफुल गोपाल गोवर्धन धारी गिरिराज धरण की विग्रह उधर थे झाड़ियों में, सब एकदम आनंदित हो गए। किसी को पता है मैं किस विग्रह की बात कर रहा हूं इधर? ये कौन से विग्रह? अभी अभी कहां पे है ये विग्रह? श्रीनाथ जी। ये श्रीनाथ जी की बात हो रही है यहाँ पे। गोवर्धन धारी, वही गोवर्धन धारी है, श्रीनाथ जी की बात हो रही है। आवरण दूरा करी करी लविदिते महाभारी ठाकुर के नारे चाल इते। इसके बाद वो विग्रह को मोटे मोटे ब्रजवासी पांडाए आए और उनको एकदम एक साथ उठाकर गोवर्धन के ऊपर एकदम, आप अभी भी जाओगे तो वो जगह है गोवर्धन में, वो जो वल्लभाचार्य मंदिर है ना, श्रीनाथ जी मंदिर, बस उसके ऊपर ही एकदम पुचरी का लोटा से आप यू टर्न मारोगे ना ऐसे जैसे करते हो, तो वो नहीं है, वो पुचरी का लोटा में वो कौन से बाबा जी है उधर, वो क्या नाम है उनका मंदिर? पुचरी के लोटा में वो कौन सा मंदिर है? पुचरी का लोटा टेम्पल नहीं है? उधर से टर्न मारोगे ना तो तुरंत आता है, पर यू हैव टू गो ऑन अ मार्ग, इंटरनल मार्ग, डोंट गो ऑन द रोड। जो अंदर से जो गोवर्धन का मार्ग है ना, हम नरसिंह का मंदिर जाते हैं, वो तो पता है। कौन कौन नरसिंह मंदिर गए हो? गए हो ना नरसिंह मंदिर वृंदावन गोवर्धन में? गए हो राइट? तो उसी पे जो परिक्रमा चलती है ना, उसी जब मंदिर से ऐसे होकर ऐसे जाते हैं, वहां पे अंदर की तरफ से आएगा। ये इजीली कहां से पता है? मुखारविंद के पास भी आता है ये, जतिपुरा के उस साइड। आपको जाना पड़ेगा वापस गोवर्धन परिक्रमा में, सॉरी, और कोई विकल्प नहीं है। तो ये मंदिर वहां पे है जहां पे ओरिजिनली गोपाल विग्रह जो श्रीनाथ जी थे उनको स्थापित किया गया था, ओरिजिनली वहां पे थे। फिर माधवेंद्रपुरी ने मंदिर के ऊपर एकदम गिरिराज धरण को स्थापित किया और 900 पॉट्स गोविंद कुंड से पानी लाए, सारे पानी को फिल्टर किया और महाअभिषेक हुआ। पहले विग्रह को सेंटेड ऑयल से मसाज किया गया, सुगंधित तेल से, अच्छे से सुगंधित तेल से मसाज करने के बाद पंचामृत से अभिषेक हुआ उनका। पंचामृत से अभिषेक होने के बाद पंचगव्य का अभिषेक हुआ। पंचगव्य क्या क्या है बताइए? पंचगव्य क्या है? अरे किस किस को पता है पंचगव्य क्या है? पता है? किस किस को नहीं पता है? हाथ उठाइए। किसी को भी नहीं पता। पंचगव्य, गव्य मतलब गाय। गाय से 5 चीजें कौन सी आती है? दूध, फिर दही, घी, ना, गोबर और गौ जरण, काउ यूरिन। दिस 5 थिंग्स का अभिषेक होता है। द ओरिजिनल अभिषेक प्रॉपरली, फर्स्ट फ्रॉम द पंचगव्य, सेकेंड फ्रॉम द पंचामृता, then scented water. For Maha Abhishek, it needs to be minimum 24 gallons of water. 24 gallons means 1 gallon is how many liter? 4 liter. Nice. So 24 means 24 times 4 is how much? 96. 96 liter pani, approximately 100 liter pani ho, then it is called Maha Abhishek. कितना लीटर पानी? 100 लीटर पानी।
इंडिया में हम शायद ना कर पाए महाअभिषेक, क्योंकि उधर कभी कभी पानी की कटौती होती है। कनाडा में महाअभिषेक ना करने का कोई कारण नहीं है। अगली बार हम प्रयत्न करेंगे कि हम 100 लीटर पानी से भगवान को नहलाए, नरसिंह चतुर्दशी में एटलीस्ट। ठीक है, वो तो 15 लीटर का एक बैरल आता है ना, 15 या 10 लीटर का, तो ऐसे 10 लाने के, सिंपल। ठीक है, कनाडा में बहुत पानी है, इधर पानी की कोई कमी नहीं है। अरे है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे उत्साह से बोलो, नहीं है पानी की कमी। ठीक है, हाँ। तो इधर वंस इन एन ईयर हम महाअभिषेक तो कर सकते हैं, पंचगव्य से भी। हमारे लिए गोबर और काव यूरिन अरेंज करना बहुत आसान है, हम तो आए दिन करते रहते हैं गोबर और काव यूरिन अरेंज, राइट। दही, दूध और घी भी अरेंज हो सकता है आसानी से, राइट। अभी जन्माष्टमी में याद करवाना, हम अभिषेक पंचगव्य से भी करेंगे। आप इससे समझ रहे कि गाय का होना कितना आवश्यक है। और वो जर्सी गाय बरसी गाय नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल वैदिक गाय, भारतीय गायों की मैं बात कर रहा हूं, वैदिक। ठीक है, हरिभक्ति विलास में कहा गया है that the deity should be bathed in water mixed with yogurt and milk, accompanied by the sounds of conch shell bells and other instruments, and the chanting of the mantra Om Namo Bhagavate Vasudeva, as well as the chanting of the Brahma Samhita verse beginning Chintamani Prakara Sadmasha Kalpa Vraksha Lakshavriti Shusurbir Abhipalayantam Lakshmi Lakshmi Abhipalayantam Lakshmi Sahasra Sambrama Sevimanam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Everyone should know Brahma Samhita. Venum Varankava Ravinda Dalayataaksham Varhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindam Adipurusham. इतना तो याद रखो, वह हम बच्चे थे ना तब हमें कुछ और याद नहीं था, तो हमें पंचलाइन याद रखते थे। जैसे ही आए ना सब एक साथ गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बचामि, इतना तो याद रख ही सकते ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बचामि। और बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ सेंटेड ऑयल से वापस विग्रह का मसाज हुआ। अत्तर, अत्तर, सुगंधित तैलम, दैट्स द परफेक्ट वर्ड। इदमासनम समर्पयामि स्वागतम सुस्वागतम, इदम आचमन्यम एष मधुपारकः, इदम पुनराचमन्यम वापस पुनः आचमन्यम, एतत् सुगंधित तैलम, फिर सुगंधित तैलम, उसके बाद इदम स्नान्यम, उसके बाद इदम वस्त्रम, उसके बाद इदम उपवीतम, इमानी अभारणानी, अभारणानी मतलब जवेरात, भगवान को गहने, ज्वेलरी। फिर एशे गंध, एतानि पुष्पानि, इदम माल्यम, माल्यम मतलब फुलहार की माला, एतत् तुलसी पत्रम, इदम पुष्पम, एशे धूपः, एशे दीपः, इदम नैवेद्यम। फिर कुछ बच गया होता, इदम सर्वम। You should know, all of you should know. ब्राह्मणी गायत्री जो जो लेना चाहते हैं वो सब को, आर यू रेडी फॉर गायत्री? ओ सोच लेना, सॉरी मैं वैसे चालू क्लास में बॉम्ब नहीं फोड़ा, पर मेरे दिमाग में था तो इससे पूछ लिया। ओके, बा को तो हो ही। हाँ हाँ, बात करेंगे करेंगे, पर मुझे सेवक चाहिए, इसलिए मैं गायत्री का सोच रहा हूँ। गायत्री करके लाडो बन के बैठना है घर पे तो मत लेना गायत्री। मैं अकेला थक जाता हूँ 30 किलो के विग्रह को उठाकर। तो आप आधा आधा तो उठा सकते हैं ना, और अकेला अभिषेक करके भी मैं थक जाता हूँ, तो 4-5 माताएं हो तो 100 लीटर पानी का अभिषेक करने में आसानी होती है, सब एक साथ करे तो। प्रभु को तो पता नहीं कितने युग हो गए गायत्री लेते लेते, पर आपसे उम्मीद है। हम बाद में बात करेंगे।
उसके उपरांत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि भगवान को ये सब फिर पंचगव्य के नहलाने के बाद पंचगव्य से अच्छे से उनका अभिषेक हो जाने के बाद वापस सुगंधित तेल से मसाज किया जाता है। टोटल 3 बार अलग अलग सुगंधित तेलों से मसाज करते हैं। ये ध्यान से सुनो। उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं बार्ली पाउडर, wheat powder, vermilion powder, urud dal powder, and another preparations called avata. What is avata? Avata is made by mixing banana powder and ground rice. इन सबको डीटी के विग्रह पे, भगवान के विग्रह पे अच्छे से शरीर पे उनके लगाया जाता है। किससे? मुझे याद कराना, इस बार वृंदावन जाना है तो लेकर आना है। गाय की पूंछ के बाल से उसका ब्रश बनाया जाता है, वो ब्रश से लगाया जाता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं इससे, इसको लगाने के बाद फिर वापस नाइस फिनिश होता है उसका, फिर वापस पानी से थोड़ा नहलाओ, वापस तेल से मसाज करो। चौथी बार। उसके बाद 24 गैलन पानी से अभिषेक करो, which is that is called Mahabhisheka. So to perform the Mahasnana, at least 2.5 manas. 2.5 manas means about 24 gallons of water needed to pour over the body of a deity. 100 liters approximately, 9600 liters. Okay. श्रीअंग मार्जन करी वस्त्र परिला, चंदन तुलसी पुष्प माला अंगी दिला। फिर ये सब करने के बाद क्या किया? भगवान के विग्रह को अच्छे से सुगंधित पुष्प अर्पण किए, वस्त्र अर्पण किए, तुलसी की माला, चंदन से लेपा भगवान के शरीर को अच्छे से, एकदम पूरी तरह से। धूप दीप करी नाना भोग लागेला, दधी दुग्ध संदेश आदि यथा किछु हैला। फिर उसके बाद क्या किया? धूप दीप नैवेद्य, नैवेद्य में संदेश इत्यादि बहुत अलग अलग प्रकार की मिठाइयां भगवान को अर्पित किया। सुवासित जल नवा पात्र समर्पिला, आचमन दिया से तांबुल निवेदिला। फिर भगवान को सुगंधित पानी, सुगंधित पानी मतलब यू कैन नॉट पुट अत्तर इन दैट। सुगंधित पानी मतलब नेचुरल वाटर्स, केवड़ा है, थोड़ा गुलाब जल है, ये जो नेचुरल फ्लेवर्स जो वाटर्स होते हैं ना, उसको मिक्स करके सुगंधित पानी बनाया जाता है, या चंदन को मिक्स करके, थोड़ा चंदन और कर्पूर मिक्स करके, वैसे सुगंधित पानी होता है। सेंट डाल के नहीं, सेंट इज केमिकल, राइट? मतलब वो रसायन है, बट वो थोड़ा केमिकलिक रसायन है, इट्स नॉट एडिबल इजीली, याद रखना। पर भगवान को सुगंधित पानी आचमन के लिए और पीने के लिए देना भी भगवान को बहुत प्रिय है। इन सबके महात्म्य है हरि भक्ति विलास में, किसी दिन मैं बताऊंगा। हर एक चीज का महात्म्य है, तो ये देने से ये महात्म्य, ये देने से ये महात्म्य, ऐसा। फिर तांबुल देने के बाद, आरती करने के बाद फाइनली बहुत सारी स्तुतियां, और सभी लोगों ने अपने हाथ उठा उठा के, सारे गोवर्धन वासियों ने उठा उठा के प्रणाम किया और अपने सब कुछ भगवान को समर्पित किया। इनको, गिरिराज धरण को। उसके बाद आजू बाजू के विलेज से बहुत सारे ब्राह्मण आए। 10 ब्राह्मण, कितने? 10 ब्राह्मण को रसोई सौंपी बनाने के लिए। 10 ब्राह्मण परिवार को उन्होंने भगवान के लिए बहुत सारा मतलब अन्नकूट, जैसे गोवर्धन में अन्नकूट हुआ था ना, जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था, उसके बाद उतना ही बड़ा अन्नकूट अब हो रहा है। इतना सारा भोग भगवान के लिए बनाया, फिर वो भोग को समर्पित किया, भगवान को चढ़ाया। डू नॉट स्लीप, वेक अप। वापस वो स्टोरी बोलू क्या मैं? नहीं ना, आई डोंट वांट टू वेट। हाँ, डू यू नो द स्टोरी ऑफ कथाकार? Who doesn't know the story of Kathakar? I'll tell you. There is a reason why I say this. Every time someone sleeps, I don't want anyone to sleep. ये कथा मैंने सुनी थी, एक बहुत मस्त हमारे भागवत प्रवक्ता है, परम पूज्यपाद सार्वभौम प्रभु, His Grace सार्वभौम प्रभु,
फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध से है वो, उधर प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा कि एक बार एक कथाकार था, उनको ऊपर टिकट फट गई, उनको बुलाया ऊपर, वो वेटिंग में बैठे थे ऐसे बाहर, दरवाजा खुला नहीं था भगवान के धाम का। उनको बोला कि आप बैठो इधर, आपको हम हिसाब किताब थोड़ा बाकी है। वो वेट कर रहे थे कि मुझे अंदर लेंगे अंदर लेंगे। और उतनी देर में उन्होंने देखा कि एक आदमी से, वो बस ड्राइवर जैसा कपड़ा नहीं होता इंडिया में, वो सरकारी बस का, वो GSRTC का जैसे ऐसे, फिर वो अंबाजी नो धार चढ़े, खबर है, फिर वो ऐसे घेर डालते हैं। वो प्रार्थना कर सके बस पहुंच जाए ऊपर, और कुछ नहीं, फिर नीचे तो अपने आप ग्रेविटी ला देगी बस को। तो वो ऐसा एक ड्राइवर को देखा, और जैसे ही वो ड्राइवर आया फटाफट दरवाजा खोला, उसको अंदर ले लिया। और ये कथाकार को बड़ा बुरा लगा, मैं तो आजीवन भगवान की कथा की है। डू यू नो दिस स्टोरी? ओके गुड। तो आजीवन भगवान की कथा की है मैंने, और मुझे क्यों बाहर बिठा के रखा है? तो वो गए पूछे द्वारपाल को, ए ये क्या है? कि मैं कथाकार हूं, मैं भगवान का कथा पूरा आजीवन किया है, और इसको फटाफट अंदर ले लिया और मुझे इधर बाहर बिठा के रखा है। कि महाराज, आप जब कथा कहते थे तब आधे से ज्यादा लोग आपकी कथा में खराटे मारते थे, बड़ी ही एकदम फैसिलिटीज के साथ। आपके कथा में एकदम मस्त कूलर चलता था, एसी था गर्मियों में, प्रसाद भी था, आलू की सब्जी होती थी, पूरी होती थी, और ब्रेक होता था तो सब प्रसाद लेकर आकर बैठते थे। तो आधे से ज्यादा लोग तो घर पे बिजली नहीं थी, इसलिए आपके कथा में आकर सोने ही आते थे। तो आधे से ज्यादा लोग आपकी कथा में सोते थे। और ये जो बस ड्राइवर जो अभी अभी गया, वो जब बस चलाता था तब सारे लोग राम 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 कांस्टेंट बोलते थे, इतनी खतरनाक बस चलाता था। तो उत्सव, I don't want to wait outside, so do not sleep. Okay. So back to this. Rice preparations बनाए थे. So there are only 5 things. Prabhupada mentions over here in the purport: vegetables, ghee, अन्ना, दूध and दही. इतनी 5 चीज से हजारों वैरायटी बनी थी. Nothing else. No fruits. सिर्फ इन 5 चीजों से. Prabhupada is mentioning in the purport over here. I want everyone to read the purport when they go home. In the Ankutta ceremony, the purport, Prabhupada clearly says there was nothing like, extravagant. These 5 things have all the nutritional values. Ghee, doodh, vegetables, anna and dahi. That's all. Everything. This is pure Ayurvedic diet. जो भी वन्य मिला था, वो भी कौन सी सब्जियां थी? वन्य सब्जी, वन्य साग। जो जंगली जो भी साग मिला था उस समय पे एडिबल होता था। आजकल तो हम जहरीला चीज कितना होता है, कोई भी जोश में आकर कनाडा यहाँ पे जाकर लेवाक में चलो, वो ऑनापिंग फॉल्स के पास बहुत सारी वनस्पति है, मत तोड़ना, उधर पॉइजन आइवी और ओक भी है। तो पता चला आप पॉइजन आइवी लेकर आए खाने के लिए, वो छूकर खुजली खुजली होती है, तो इधर जो वॉलमार्ट में मिलता है वही खाना। पर मुद्दा ये है कि वनस्पतियां, these all are very sufficient to eat. You don't need extravagant food for nutritional purposes. इसके बाद I want to read this purport. Listen to this very 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 carefully. इधर प्रभुपाद is mentioning कि प्रसाद लेने के बाद भी भोग अर्पण किया, प्रसाद untouched था, but it was prasad. Prabhupada says the atheist cannot understand how the Supreme Personality of Godhead, appearing in the form of the deity, can eat all food offered by the devotees. Prabhupada is quoting Bhagavad Gita 9.26. Patram pushpam phalam toyam ye me bhakta prayachati tamadam bhakta upratam ashnami priyatatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit or water,
I will accept it. ध्यान से सुनना ये परपट. The Lord is Purna, complete, and therefore he eats everything offered by his devotees. However, by the touch of his transcendental hand, all the food remains exactly as before. It is said that the quality that is changed. It is the quality that has changed. Before the food was offered, it was something else. But after it is offered, the food acquires a transcendental quality. Because the Lord is Purna, he remains the same even after eating. समझे आप या ऊपर थी क्यों? I was hoping that someone would say before I read that. Thank God. So there is no difference between Krishna and Krishna Prasad, right? So Lord is Purna. So even when the Lord expands into different avatars, he remains Purna. So even after Prasadam being accepted by Krishna, the Prasad remains. तो अब कोई पूछे कि प्रसाद तो भगवान खाए, इसका क्या प्रूफ है? तो कि नहीं, भगवान accepted the bhava in it. He already ate, but he ate it. That's the reason it's always full, because when Krishna touches everything, that prasadam has become Krishna. It's as good as Krishna. So Krishna is Purna, prasadam is Purna. अरे समझा कि नहीं? नहीं समझा है तो बोलो नहीं समझा है. समझा? Do you want to attend? Please have a seat. Welcome. What's your name? You can sit here. What's your name? Janet. Nice to meet you, Janet. So what brings you here? Oh, the Mass. The Mass is actually happening. Are you like from the African church, right? Yeah, they happen not today. They happen like usually some other day. I don't exactly know what dates. I think it's alternate or once a month, right? I think it's alternate Sundays or once a month. I think it's alternate. Okay. However, we are doing not the Christian thing, but we are doing something which is spiritual. If you want to join, you're very much welcome, and you can have dinner also later on. Sorry? We are done at 8 o'clock. Yes. It's up to you. Feel free to sit down. Okay? So now I'm going to continue in English because we have someone who won't understand if I speak in Hindi, okay? So for you, I will speak in English now. Okay? So now, do you understand? Because the Lord is complete, okay, anything touched by the Lord, despite if the Lord manifests himself into several expansions, the Lord always remains complete. Because the Lord is complete, omnipotent, right? So similarly, when the leftover, we say that, okay, we offered this to the Lord, we make any preparation, we offered it to the Lord, despite our eyes, material eyes cannot see that Lord has accepted it, because it's material, that is something transcendental, it is beyond the matter. So we feel that, oh, it's not, Lord has not accepted. No, Lord has actually accepted it. Because Lord has touched it, is as good as the Lord now. So it is complete. It stays complete. So the remnants that we eat, like for the food that we prepare, we pray and we offer to the Lord, it is also as good as the Lord's mercy. Okay? Now over here, whenever our senses are purified by constantly being engaged in devotional service of the Lord, we can understand Krishna's activities, names, forms, qualities, and pastimes. Atah Shri Krishna namadi na bhavit grihyam indriyare sevan mukhe hi jivada swayam eva spurit tadaha. No one can understand Krishna by the blunt material senses. भगवान को समझना इस भौतिक इंद्रियों से आसान नहीं है.
उनका ध्यान यहाँ पे नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा ताकि कुछ लोगों को जिनको अंग्रेजी समझ में नहीं आती, does not understand English, I'll try to jump between both the languages. Okay, so that some people who doesn't understand English, they understand English. Okay, they understand what I'm saying. So in Bhakti Rasamrit Sindhu, Rupa Goswami Pad is saying, but he reveals himself to the devotees, being pleased with them for their transcendental loving service unto him. So Krishna reveals to the devotees, but not to who tries to understand the Lord with mental speculation, with material barometer, right? The material, what do you call that? Material checklist. Through that, the Lord cannot be understood. Itha anubhava kaila madhava gosai tandra tani gopalera lakana kichu nahi. गोपाल ने सभी कुछ बड़े ही चाव से सब कुछ स्वीकार किया. He ate everything. The Lord ate everything, that whatever was accepted, offered by his devotees. Now, one point. After that, all the disciples, everyone who came there, they all took initiation from Madhavendra Puri. Madhavendra Puri initiated almost 10 Brahmanas over there. How many Brahmanas? Now, what are they? They are already Brahmanas, right? They are already what? Brahmanas. But yet, it's up to you. You're not, like, it's up to you. You can sit and relax, okay? Do whatever favorable to you, okay? Even if you want to, like, sit with a support, we have arrangement even in the back. Like, if you want to take a support and something, right? So even that is there, so it's up to you, okay? Formally, at the end of the Dwapar Yuga, Govardhan Puja was done. Prabhupada is mentioning over here in the purport that this exact thing was extremely similar to like the Govardhan Puja that happened in the Dwapar Yuga. Ask Harsh to take my son inside and play with him. No, Harsh heard it already. All the Brahmanas present on that occasion were initiated by Sri Madhavendra Puri into the Vaishnava Siddhanta cult. And Madhavendra Puri engaged them in different types of services. Sakala Brahmana Puri Vaishnava Karila Sei Seva Madhe Sabani Ojila. And he assigned, Madhavendra Puri assigned each and every Brahmanas with different services. Why Brahmanas were initiated? Again, they are already Dvijas. Many a times it is understood that Brahmanas, because they are from the priest family, they don't need to be initiated. Listen to this very carefully. What Vrindavan Das Thakur is, Krishnadas Kaviraj Goswami is saying, Sakala Brahmana Puri Vaishnava Karila. One who is a Brahmana but has not received a Vaishnava mantra is not qualified to worship a Vishnu Murti. Just to be clear. One who has received Vishnu mantra, he is qualified to worship a Shakti, a Shaivya, as well as Vishnu deity. That is the reason all the Brahmanas were initiated by Madhavendra Puri, because to pursue the service of the deity, one has to have the Vaishnava mantra. Purport, I'm going to quote something from the purport. In Hari Bhakti Vilas, it is stated that Sat Karma Nipuna Vipro Mantra Tantra Visharada, a qualified Brahmana must be expert. Qualified Brahmana must be expert in the occupational duties of a Brahmana. This is from Hari Bhakti Vilas actually. The Guru's qualification is extremely similar to the qualification of a Brahmana. The spiritual master's qualification is very similar to the qualification of a priest, that how a priest should be.
A priest, this is patana. There are 6 things. He must be expert in worshipping. He must also be able, so the Brahmanas, his duties are mentioned in 6 Brahmanical judgments. Patana means that the Brahmana must be conversant with the Vedic scriptures. He must be an expert in Vedic scriptures and he must be able to recite it properly. He must be able to teach others to study the Vedic literature. This is patana, means teaching also. He must also be expert in worshipping different deities and in performing the Vedic rituals and yagyas. A Brahmana should be expert in, this is purport by Prabhupada. You should be expert in Vedic rituals and yagyas. On account of this yagya, the Brahmana, being the head of the society, performs all the Vedic rituals for Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. This is called yagya, assisting others in performing ceremonies. The remaining 2 items are dana and pratigraha. The Brahmana accepts all kinds of contributions, pratigraha, from his followers. A Brahmana should accept the dakshinas, the dravya, the dana, everything that is given to him, pratigriha. Okay? However, the Brahmana, the priest, the real priest, accepts all kinds of contributions from his followers, but he does not keep all the money. The true priest, the true Brahmana, the true spiritual master, he will not keep all the money. He keeps only as much as required and give the rest of the balance to others in charity. That is dana. So for a Brahmana, there are 6 things, and amongst the 6 things, 2 of the things of those 6 are to accept charity and to give charity. So a Brahmana should do both. A priest is not that the one who only takes. A priest is supposed to also give charity, not just accept charity. In order for a qualified Brahmana to worship the deity, he must be a Vaishnava. Thus, the Vaishnava position is superior to that of a Brahmana. Purport by Prabhupada. Okay? Madhavendra Puri, this example given by Madhavendra Puri confirms that even though a Brahmana may be very expert, he cannot become a priest as a servitor of the Vishnu Murti unless he is initiated in Vaishnava mantra. वो ब्राह्मण कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, पर वो भगवान विष्णु के विग्रह की सेवा करने का लायक तब तक नहीं होता जब तक वैष्णव मंत्र से दीक्षा विधान उसका नहीं हुआ है. This is the method of worshipping the deity. 6 artis, at least 6 bhogas, from Mangal Arti to Shaina Arti. This is the method of worshipping the deity according to the rules and regulations set by the predecessors. Our sampradaya, listen to this very carefully. Our sampradaya belongs to the disciplic succession of Madhavendra Puri, who belonged in the Madhva Sampradaya. We are in the disciplic succession of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was initiated by Sri Ishwar Puri, a disciple of Madhavendra Puri. Our sampradaya is therefore called the Madhva Gaudiya Sampradaya. As much we must carefully follow in the footsteps of Sri Madhavendra Puri and observe how he installed the Gopal deity on the top of the Govardhan hill. So this is how the Gopal deity was. Have we discussed Krishna stole the pot yet? No? Should I discuss that? Should I discuss that or not? Yeah. Okay. Anna, Grita, Dadi and Dugdha, add food grains. So the 5 things are grains, vegetables, ghee, milk and yogurt, as I said earlier.
What are the 5 things which is extremely necessary for food items? Fruits, vegetables, no, not fruits, ghee, vegetables, grains, yogurt, and milk. This 5 things. Because we are in we trying to cultivate the mode of goodness, we eliminate the foodstuff which are in the mode of passion and ignorance. Everything is divided into 3 categories: goodness, passion, and ignorance. Goodness is fruits, vegetables, grains, milk, dairy products, etc. Mode of passion is deep fried food, spicy food. That is all in the mode of passion. Meat, fish, and eggs are in the mode of ignorance. And we try to eliminate and never consume meat, fish, and eggs, because Lord does not accept meat, fish, and eggs. Hence, we also cannot accept meat, fish, and eggs. व्रजवासी लोकेर कृष्णे सहज प्रीति गोपालेर सहज प्रीति व्रजवासी प्रति. The ideal place to execute Krishna consciousness is Vrajabhumi or Vrindavan, where the people are naturally inclined to love Krishna and Krishna is naturally inclined to love them. In Bhagavad Gita it is said, Ye yathama prapadyante tamstataiva bhajamyaham. This is a responsive cooperation between the Supreme Lord Krishna and his devotees. The more a devotee sincerely loves Krishna, the more Krishna reciprocates. Krishna accepts anything which is offered with love. Preeti. It is offered with preeti, love. Pyar se. Tesam srita yuktanam bhajatam preeti purvakam dadhami buddhi yogam tam yena mam upyanti te. Bhagavad Gita, chapter 10, verse number 10. Preeti purvakam. With love. Now, Madhavendra Puri was asleep one day. Madhavendra Puri गहरी नींद में सो रहे थे. बहुत function हुआ. This Ankuta happened for like almost a month. क्योंकि अलग अलग गांव से सारे व्रज के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग आए और गांव वाले बोले कि हमें भी करना. Even we want to do. Even we want to do. So every village was given a chance to do Ankuta every day. This went on for over a month. One great Kshatriya gave a beautiful temple. He constructed a beautiful temple for Gopal deity. Then the stone throne was built. A throne made of stone was built for Gopal deity. A beautiful bed was made for Gopal deity. Gopal deity was put to rest on the bed officially so that he can sleep. Now we imagine how big that stone deity might be and how strong that bed might be. So, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Wake up, no sleeping. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Where is Chintan? Where is Kushal? Where is Jai Jagdish? Jai Jagdish Prabhu, because this car. And where is Gaurav then? चोर का भाई घंटी चोर. क्या है? Call Kushal and ask where is he and Chintan. No, they are on the way. They should be here by now. Where is Pranali today? Oh, okay. You are here. I was kind of missing some people. Anyway. Now, this Gopal boy came to the dream again of Madhavendra Puri. And now he asked Madhavendra Puri, Oh Madhavendra Puri Gosai, let them discuss. That's very important. Ho gaya Yojana? Ho gaya? Now I'll speak then.
So from before this dream, what happened? There were two brahmacharis, Brahmana brahmacharis who came from Bengal. They were Naishtika brahmacharis. So Madhavendra Puri immediately initiated them and gave them the service of the deity. Okay, that under their service, they will be the chief. Now this Govinda, Gopala, Madan Mohan, Govind, Madan Mohan, Gopinath, Shyam-Sundar, these all are the deities of the six Goswamis. Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Radha, Damodar, Shyam-Sundar, Radha Raman, and Gokulananda. The disciples of the Goswamis were entrusted with the Seva Puja of these temples. So what you see, this Goswami systems of, they are not the lineage of those Goswamis because they all were brahmacharis. Make sense? So they were given initiation. Those Goswamis gave initiation to certain devotees. Their family is worshipping these deities right now. So for example, Sanatan Goswami's deity, Gopal Bhatta Goswami's deity is Radha Raman. Sanatan Goswami's deity is Radha Madan Mohan. Rupa Goswami's deity is Radha Govinda. Sanatan Goswami's deity, I said, which is Madan Mohan. Madhu Pandit Goswami's deity, Radha Gopinath. Jiva Goswami's deity, Radha Damodar. Who is Gokulananda deity then? No. I think it's Vishwanath Chakravarti Thakur. I'm not sure, but I'll double check. Because Gokulananda is right beside Radha Raman. Okay? And that Narottam Das Thakur's Shaligram Shila that Mahaprabhu gave him is there. And there are three deities, Gokulananda and other two also. I forgot the name, but I'll have to check in the... I asked the lady over there and she gave me nice details of all the deities over there. So I'll have to ask her. But anyway, so in the dream, Madhavendra Puri's dream, the Lord appeared, the Gopal Vigraha appeared and said, "My dear Madhavendra Puri, there is this hot summer time and I'm feeling extremely hot. Gopal kahe Puri amara, ताप नाही आय, मलयज चंदन लेप ताबे से जुड़ाय." Go where? Go to Malayagiri and get the chandan. और चंदन लगाओ मेरे शरीर पे क्योंकि मुझसे ताप बर्दाश्त नहीं हो रहा. So Gopal Bhatta Goswami goes to Malayagiri, which is in Malaysia. So, no, it's not. Malayagiri is actually Malaya Hills, which is in the forest of Nilgiris, where the Nilgiri trees are. So it's South India, the Nallamala forest, near Orissa. So from Orissa, the Malaya region starts, goes to Andhra and all, where there are a lot of sandalwood trees. So the Lord said, "Bring the sandalwood, make a pulp and apply on my body." Purport. He therefore asked Madhavendra Puri to bring sandalwood from the Malaya province. Sandalwood produced in Malaya is very popular. That province is situated on the western Ghat and the hill Nilgiri is sometimes known as Malaya Hill. The word Malaya Ja is used to indicate the sandalwood produced in the Malaya province. Sometimes the word Malaya refers to the modern country of Malaysia. Formerly, listen to this very carefully, formerly this country also produced sandalwood, but now they have found it profitable to produce rubber trees. Although the Vedic culture was once prevalent in Malaysia, now all the inhabitants are Muslims. The Vedic culture is now lost and destroyed in Malaysia, Java and Indonesia. Malaysia also had lots of Vedic culture. Bring sandalwood pulp from Malaya Anayana Nilachala Haita. So where is Malaya?
is near to where? Nilachala haita, अन्य haita nahi tumi, chala tvarita. Go to Malayagiri and get me sandalwood pulpa near Jagannath Puri. So Lord is making arrangement for Madhavendra Puri to even take the darshan of Lord Jagannath. शांतिपुर आयला अद्वैताचार्य घरे पुरीर प्रेम देखी आचार्य आनंदे अंतरे तांद्रथानी मंत्र लैला यातना करिना चलिला दक्षिणे पुरी तांद्र दीक्षा दिना. By seeing Madhavendra Puri's devotion towards the Lord, Advaita Acharya Gosai got extremely impressed and said that you have to give me initiation. You have to give me initiation. And Advaita Acharya took initiation from who? Madhavendra Puri. Who is Advaita Acharya from the Tattva Siddhanta? Mahavishnu and Sadashiva combined is Advaita Acharya. This is the reason why Mahaprabhu used to consider sometimes Advaita Acharya as his spiritual master, because Advaita Acharya was the god brother of his spiritual master, Ishwar Puri. समझ रहे हो? Purport. By in the connection, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments on Advaita Acharya's initiation by Madhavendra Puri. Actually, people beg to be initiated by a Grahastha Brahmana partaking of the Varnashram Dharma institution can secure various types of paraphernalia or to worship Lord Vishnu through his honest labor. I'm going to go more up. Okay, I want to cover certain parts. Listen to this carefully. Chaitanya Mahaprabhu quotes, Kiba vipra kiba nyasi shudra kena naya yehi Krishna tattva vitta sei guru hoya. A person may be a Brahmana, a sannyasi, a Kshudra or whatever, but if he is a well conversant in the science of Krishna, he can become a guru. This statement is supported by Sri Madhavendra Puri according to the Pancharatra injunction. According to Pancharatra ke hisab se, only a householder Brahmana, Grahastha Brahman jo hai, only he can initiate. Others cannot. When a person is initiated, it is assumed that he has become a Brahmana. Without being initiated by a proper Brahmana, one cannot be converted into a Brahmana. In other words, unless one is a Brahmana, he cannot make another a Brahmana. A Grahastha Brahmana partaking of the Varnashram Dharma institution can secure various types of paraphernalia to worship Lord Vishnu through his honest labor. Actually, people beg to be initiated by these householder Brahmanas. Because this is called the topmost initiation. When you take Diksha from a Grahastha Brahmana, that is called the topmost initiation according to Pancharatra. Just to become successful in the Varnashram institution or to become free from the material desires. It is therefore necessary for a spiritual master in the Grahastha ashram to be a strict Vaishnava. To be a strict Vaishnava. Phone side में रखो और सुनो. काम है तो खत्म करो. A spiritual master from the sannyas order has very little opportunity to perform archana, which is deity worship. But when one accepts a spiritual master from the transcendental sannyasis, the principle of Chaitanya Mahaprabhu gave us his opinion in the verse, Kiba Vipra, Kiba Nyasi, etc. This indicates that the Lord understood the weakness of society in its maintaining that only a Grahastha Brahmana should be a spiritual master. Sri Chaitanya Mahaprabhu indicated that it does not matter whether the spiritual master is a Grahastha, a sannyasi, or even a Kshudra. A spiritual master simply must be conversant in the essence of the Shastra. Now, Madhavendra Puri on his way
रेमुना ते कैल गोपीनाथ दर्शन तांद्र रूप देखिना हैला विबला मना. He came to Ramuna and he saw the beautiful deity. विग्रह भगवान गोपीनाथ के विग्रह के दर्शन किया और वो पूरी तरह से गोपीनाथ के विग्रह में अपने आप को पूरी तरह से भूल गए. इतना सुंदर विग्रह है गोपीनाथ का. उन्होंने वहां पे ब्राह्मणों से पूछा, he asked the local brahmanas कि आप लोग खाने में क्या क्या बनाते हैं, भगवान के लिए क्या क्या बनता है यहाँ पे. The Brahmanas helped him with lots of varieties, and this is what we prepared. Because he wanted to learn so that he can use that same for Gopal in Govardhan, for Giriraj. Okay, Giriraj Dharan. उनके लिए भी बना पाए, इसलिए ब्राह्मणों से पूछा कि आप यहाँ पे क्या बनाते हैं गोपीनाथ के लिए. तब उन्होंने बताया, वह एक ब्राह्मण ने, कि ये सब तो हम बनाते अलग अलग, पर संध्याया भोग लागे क्षीरामृत केली नाम द्वादश अमृत पात्र भरी अमृत समान. संध्या काल के समय में हम भगवान को भोग लगाते हैं खीर का, और वो इतनी 12 मटके में 12 डिफरेंट पॉट्स वी ऑफर दिस टू द लॉर्ड इन द टाइम ऑफ इवनिंग. वो इतना सुंदर मधुर टेस्ट है उसका कि अमृत जैसा उसका स्वाद है, इसलिए उसका नाम क्या है, अमृत केली. So now you remember Guru Mata's name Amrita Keli. Prabhupada gave it from this. उसका वो खीर का नाम क्या है, अमृत केली. गोपीनाथेर क्षीर बलि ही प्रसिद्ध नाम यार पृथ्वी ते आईची भोग कहान नाही आर. कि पूरे पृथ्वी पे कहीं पे भी ये क्षीर जैसा क्षीर नहीं बनता है. ये सुनकर माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा आई कि अगर काश मुझे थोड़ी खीर खाने को मिल जाए, चखने मिल जाए, तो मैं ये जान पाऊं कि कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक दिस स्वीट राइस, एंड देन आई कैन मेक इट फॉर माय ओन डीटी आल्सो गोपाल. एंड ही इमीडिएटली रियलाइज, ओ माय गॉड, द भगवान के विग्रह ने अब तक ये खीर खाई और मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने अपराध कर लिया ये सोचकर. हालांकि उनको ये नहीं था कि मैं अपने लिए चखूं, उनको क्या था चेतना कि मैं चखूं किनके लिए, मेरे विग्रह के लिए. पर वो वहां से शर्मिंदा, लज्जित होकर, खुद से एम्बेरस होकर वो वहां से तुरंत दंडवत करके निकल गए. और वो मार्केट में जाकर एट द मार्केट प्लेस ही स्टेड देयर एंड ही रेस्टेड देयर. शयन हुआ, भगवान का मंदिर बंद हुआ, पुजारी लॉक करके चले गए. शांति से माधवेंद्रपुरी ने कुछ मांगा भी नहीं किसी से, बेगिंग भी नहीं किया, वो केवल जाकर उस जगह पे अच्छे से सो गए. ग्रामेर शून्य हाथे वशीकरणेन कीर्तन एत पुजारी करिला ठाकुरे शयन. और माधवेंद्रपुरी कीर्तन करते 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 मार्केट में चले गए. He went to the market. After that, this pujari put the deities to rest. शयन आरती करा, भगवान को शयन करवाया. In the purport, I want to read something. As stated in Srimad Bhagavatam 7.5.23, there are 9 kinds of devotional service. Navvidha Bhakti, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Hearing, chanting, remembering, serving, worship of the deity, praying, carrying out orders, serving him as a friend, and sacrificing everything for the Lord. Although, listen to this, each process appears distinct, when one is situated on the absolute platform, you can see that they are identical. For instance, Prabhupada is giving an example. Hearing, Shravanam, is as good as chanting, and remembering is as good as chanting or hearing. Similarly, engaging in deity worship is as good as chanting, hearing, or remembering. The devotee is expected to accept all 9 processes of devotional service. But even if only one process is properly executed, he can still attain the highest position.
Paramahamsa, and go back home, back to God. Nija kritya kari pujari, karila shayana. What happened? Swapne Thakura Ashi Bali Balila Vachana. Thakurji aaya. Thakurji, Krishna appeared in the dream of the priest of the Pujari and said the following words. Uthaha Pujari kara dwara vimochana Ksira ek rakhi achi sannyasi karana. Pujari, utho, darwaza khulo, open the door of the altar. I have kept one pot of sweet rice. एक खीर का एक मटका मैंने रखा है साइड में एक सन्यासी के लिए. धंधार आचले धाक एक क्षीर हय तोमार जानिला ताहा आमार माया. The sweet pot, the pot of sweet rice is just behind my cloth curtain. You did not see it because of my tricks. कि मैंने वो मटका खीर का चुरा कर पर्दे के कपड़े के पीछे रखा है, कपड़े के पर्दे के पीछे रखा है, और मेरी माया के वजह से, मेरी ट्रिक के वजह से तुम देख नहीं पाए हो उसको. माधवपुरी सन्यासी आछ हातिता वैष्णव ताहा केते एक क्षीर शीघ्र देन लाना. क्या बोला भगवान ने? वो माधवेंद्रपुरी नाम का एक सन्यासी है, वो खाली मार्केट प्लेस में, उधर खाली बाजार में वो बैठा हुआ है. ये जाओ खीर का मटका लो और भागकर उसको जाकर देकर आओ. ये खीर का मटका. Take this sweet rice pot and go and immediately go to Madhavendrapuri and give this to him. I have stolen this sweet rice pot specially for him. स्वप्न देखी पुजारी उठी करिला विचार स्नान करी कपट खुली मुक्त कैल द्वार. He did not thought for a second. He was like, let's get up, take a shower. He opened the door. He was like, let's execute what Krishna has said. दांदर आचल तले पहिला सेके क्षीरा स्थान लेपी क्षीर लाना है इला बाहिरा. He saw that, oh my God, there is actually the sweet rice pot kept here, stolen. Now let's take this. He wiped that area and he took the sweet rice pot. द्वारदीय ग्रामे गेला से क्षीर लाना हाथ हाथ बुले माधव पुरी के छानी आना. Closing the door of the temple, he went to the village. Village में गए, मार्केट में गए और जोर जोर से ढूंढने लगे माधवेंद्रपुरी कहाँ पे है. क्षीरला ए यार नाम माधवपुरी तुम लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चोरी. So this pujari, he is extremely bewildered. Who is this Madhavendrapuri? Holding the pot of sweet rice, वो क्षीर का मटका पकड़ के वो पुजारी मार्केट में पूरे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, कौन हो तुम, कहां हो तुम, बाहर आओ, गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है. Gopinath has stolen this sweet rice pot for you. Please come out and accept this sweet rice pot. See how Krishnadas Kaviraj Goswami is writing, Shirala e yara naam madhav puri tom lagi gopinath shira kaila chori. कि तुम्हारे लिए गोपीनाथ ने ये खीर चुराई है, अब बाहर आओ जहां पे भी हो और ये खीर स्वीकार करो. I'm going to quote something from the purport, okay? मैं बार बार बोलता हूं, मैं हर बार बोलता हूं, वापस मैं बोल रहा हूं. मेरे गुरु महाराज परम पूज्यपाद श्री राधानाथ स्वामी महाराज, when he gives a class, his class, most of his class, when he's going anything with the flow of the story, right? He's literally saying Prabhupada's purports. And then in the second half, he explains the purports.
Learn this from the Prabhupada disciples. I'm requesting you. Not all, but most of the Prabhupada disciples, they will stick to the purports of Srila Prabhupada. Current generation, contemporary, lots of this youth programs से जो आते हैं, youth कुंवारे devotees, young devotees who want to be a bloggers or vloggers overnight, वो अपना interpretation बहुत देते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन में ये टक्के उठाने जितना भी दम नहीं होता. लर्न द परपोर्ट्स ऑफ शिला प्रभुपाद. आपको कोई भी शास्त्र में हरा नहीं पाएगा और कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा इफ यू नो द परपोर्ट्स ऑफ शिला प्रभुपाद. Listen to this purport. The difference between the absolute truth and relative truth. एक तो फैक्ट है और एक तथ्य है और एक सत्य है. Okay? चोरी करना is bad. Stealing something is bad. However, here the Lord himself stole the pot of a sweet rice for his devotee, so that my devotee can eat the sweet rice pot. This is the difference between the mundane stealing and the spiritual stealing. In the mundane world, when the stealing happens, the person becomes unhappy, both the parties, because this party might get caught and still the misery will come. But in spiritual and absolute truth, when Krishna does something, it causes bliss for both the parties, for Krishna as well as for his devotees. That is the difference between what Krishna does and what we do. Hence, we should never ever compare ourselves with the Lord, because we are not Lord. Many a times people will say, oh, Krishna had so many girls, why can't I have this many girlfriends? That's a very common mundane understanding. Well, Krishna had 16,108 wives, and because he was the Supreme Lord, he expanded himself into 16,108 forms. He was simultaneously present with everyone. Are you able to do that? That means you cannot have multiple partners. You have to stay married to one person. You can't have multiple girlfriends or boyfriends. Lord Gopinath has openly declared herein that he is the thief, that he stole the pot. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore never publicly discussed Krishna's dealings with the gopis. He used to discuss these dealings only with the three confidential friends. He never discussed Ras Leela publicly, as the professional reciters do, although they do not understand Krishna or the nature of the audience. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu encouraged the public chanting of the holy names on a huge scale for as many hours as possible. Ksira lana sukhi tumi kara bhakshana tomasama bhagyavana nahi tribhuvana. Oh dear Madhavendra Puri, कि आओ और एक क्षीर को लो. तुम्हारे जैसा भाग्यवान पूरे तीनों लोकों में कोई नहीं है. तुम्हारे लिए खुद गोपीनाथ ने ये खीर चुराई है. When Krishna does something when Krishna stole for Madhavendra Puri, guess who became popular? Krishna or Madhavendra Puri? Madhavendra Puri. Popular कौन हुआ? माधवेंद्र पुरी. जब वो ब्राह्मण उसने माधवेंद्र पुरी को सुना, एतसुनि पुरी गोसाई परिचय दिला, I am Madhavendra Puri. वो भी अचकाते, because he was embarrassed.
क्षीर दिया पुजारी तांद्रे दंडवत हैला। वो पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को खीर थमाई और साष्टांग दंडवत किया। Listen to the purport again. ध्यान से, a brahmana is not supposed to offer obeisances by falling flat before anyone, because a brahmana is considered to be in the highest caste. However, when a brahmana sees a devotee, he offers his dandavats. This brahmana priest did not ask Madhavendra Puri whether he was a brahmana, but when he saw that Madhavendra Puri was such a bona fide devotee that Krishna would even steal for him, he immediately understood the position of the saint. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kena Naya E Krishna Tattva Vekta Sei Guru Hoya. Had the Brahmana priest been an ordinary Brahmana, Gopinath would not have talked with him in a dream. So Brahman bhi koi kam? Since the deity spoke to both Madhavendra Puri and the Brahmana priest in the dream, practically speaking, they were on the same platform. However, because Madhavendra Puri was a senior sannyasi, Vaishnava, a Paramahamsa, the priest immediately fell flat before him and offered obeisances. What does this mean? A Brahmana, a Vaishnava is always superior than a Brahmana. What does this statement mean? Means a Vaishnava has already surpassed all the qualities of a Brahmana and hence become a Vaishnava. So until unless we have the qualities of a Brahmanas and we become a Vaishnava, we are not yet a Vaishnava. We are simply trying to be a Vaishnava. Make sense? We are just trying to be a Vaishnava because we haven't developed the qualities of a Brahmana. One who simply chants the holy names of the Lord will automatically be qualified to surpass even a Brahmana and become a Vaishnava for sure, without doubt. Madhavendra Puri goes to Jagannath Puri, offers pranams to Lord Jagannath, takes the darshan of Lord Jagannath. On his way back, he stopped at Ramuna again, but he immediately, Lord told him to leave this chandan at the Ramuna only. मत उठाओ, इधर ये उनको दे दो, ये मुझे लगाएंगे, मुझे वहां पे लग जाएगा गोवर्धन में. But he did not stay there longer. वो वहां पे ज्यादा लंबा नहीं रुके, कहीं पे भी नहीं, क्योंकि उनकी जो ये कथा बहुत प्रचलित हो गई कि माधवेंद्र पुरी के लिए गोपीनाथ ने खीर चुराया, तो लोग माधवेंद्र पुरी को ढूंढ ढूंढ के आ रहे थे दर्शन के लिए. और भक्ति में मान सम्मान बाधा है, विघ्न है, इसलिए माधवेंद्र पुरी फटाफट भाग गए वहां से, इधर टिकना ही नहीं है. In Toronto, when the deities arrived, they asked Prabhupada, they sent the picture to Prabhupada and asked Prabhupada, name the deity. Prabhupada looked at the picture. I think it was Lakshmoni Mataji, her husband. They were the recipient of a letter, I believe. Looked at the deity and said, ये विग्रह में ये कृष्ण का पेट थोड़ा बाहर है, थोड़ा टोंडू है कृष्ण. I think he has eaten Kheer. Hence his name will be Shri Shri Radha Kheer Chor Gopinath. So in Toronto, Prabhupada, remembering the Gopinath in Ramuna, Kheer Chor Gopinath in Ramuna, he named the deities of the Toronto ISKCON temple Shri Shri Radha Kheer Chor Gopinath. Even today, every day before Shayana, this kheer is offered to Gopinath.
I believe right now also the same devotee is making kheer. Do you know who that devotee is? One devotee who all of you know, by the way, once went to Ramuna. As far as someone told me this, and he asked the recipe of this, and he tried to match the recipe. And since then, Mahabhagat Prabhu is making kheer with that recipe only for Gopinath. So, Hamare in Toronto also, Chechur Gopinath is eating this kheer every evening. I think it's still going on. There is no reason for it to stop. But here, I will conclude this story by saying this. I wanted to read certain instructions of Prabhupada. First thing on the Guru, and then the second thing on deity worship. Okay, sorry. 1 second. This is the problem, this mic. Listen to this again and again. Is it recording? Nice. There are specific instructions given by Prabhupada. Okay, or those instructions have no at all, it's not clear. They are extremely crystal clear. For example, Govindas, restaurants, they should serve prasadam only, not something which is outsourced. Like kachoris and samosas made from outside and then sold for profit. That's not prasadam. The reason why I'm saying you all is because so that we know what the standards are. And anytime when someone quotes these standards, unfortunately in this part of the world, they will be labeled as fanatics. It's unfortunate, but it happens all the time. They will be labeled as fanatics. But I don't care. I'm going to say what Prabhupada has clearly instructed. The standards for Govindas is that it should be prasadam. And what is prasadam? Madhavendra Puri is in the example of Madhavendra Puri, in the Prabhupada's purports, he just mentioned what is prasadam. What is prasadam? The food was cooked by who? Brahmanas who were initiated by Vaishnav mantra. That is the top class prasadam. Now people will ask, what if we do not have such a Brahmana? Well, the program is usually started by such a Brahmana, and that Brahmana can simply make khichdi for everyone. If the extravagant prasadam cannot be prepared, simple khichdi, that khichdi will make impact in the heart of the devotees. Wo khichdi will make an impact in the heart of the devotees. Do not worry about making 5-6 varieties. But and make sure that you have chanted your 16 rounds. You are meditating upon the Lord while making that prasadam, while they're making that bhoga. Then it's offered to the deities. Even picture altar is fine, but it's offered. Restaurant food brought from outside offered to the picture is not prasadam. It is garbage. It's not prasadam. We see lots of festivals happening nowadays across North America. Festivals with colors also. A lot of festivals happens where people are dancing on DJ, mundane music, where 1 or 2 Hare Krishna kirtans will be played. They're also in background. Half-naked people are dancing, not for the Lord. That's not spirituality. Sense gratification is not spirituality. To purify the senses is spirituality. You can spiritually, you get purified, your senses get purified, eyes by seeing the Lord, by smelling amazing flowers that is offered to the Lord, hands by touching the deities and the nirmalya of the Lord, by tongue by tasting the prasadam of the Lord, ears by listening to the Hari Katha and Kirtan of the Lord, again mouth by chanting the holy names of the Lord,
legs by dancing in the kirtan or doing parikrama for the Lord. Everything is purified by engaging in the Krishna service. There is no need of doing outreach programs. If you cannot serve prasadam, prasadam. If you cannot distribute Prabhupada's books, if you cannot do kirtan. It doesn't matter even if you're having a crowd of 10,000, 20,000 public. It doesn't matter. They're never going to become devotees. Because they had not heard to the kirtan. What is kirtan? First of all, kirtan is one kirtanier whose heart is pure, who is chanting the holy names of the Lord, who is surrendered to the Lord. And when that person is singing the glories of the Lord, that will have an impact in the heart of the person. But a commercial kirtan means the person who himself is not chanting the name of the Lord, but is like a musician playing music just to show that, oh, what an amazing alap I can take. Like that, right? Those people cannot make devotees. Those people cannot transform the heart of the people. Never. The top class preachers, I don't know many of them. Most of them are not a great kirtaniers. Adi Gadadhar Prabhu. He himself says, I don't know how to sing. Amarendra Prabhu, he's reasonable kirtani, but not like what we see with biceps and everything. Okay? Nothing wrong in having biceps. Nothing wrong. I'm not saying you should not go to gym. No, you should maintain a good body, maintain a good physique. You should be appealing to people so that you can talk about the Lord. So that you can ab jaakar baat kar sako Bhagwan ke liye. But you don't need to wear such a short crop shirts and try to show your biceps to young girls, play harmonium on the girls' side, and then make them dance and have like a video of cheerleaders dancing behind you. Nonsense. That's not kirtan. That's not kirtan. You can't have that nonsense. That is not kirtan. Outside food is not prasadam. Did you see the standards of deity worship? Many times you all ask me, you haven't asked me, but we have thought many times, why can't we build a temple? Right? What have I said? Answer. We are focusing on community devotees and what is the number I have given? First class deity worship, but how? Until unless I have 40 second initiated devotees, I don't want to install Radha Krishna. Gaurnita is fine. But Radha Krishna means at least 6 offerings a day, Prabhupada standards. Clear instructions. No matter how people will say initially it wasn't like that. Yes, that's true. Maybe it's not initially when Prabhupada was there. It may not be like that because at that time, Prabhupada wanted to spread the mission. He clearly said, now the time is to boil the milk, not to water down the quality even more. We don't want a temple where there is Radha Krishna there just as a money-making business so that people can come and see, oh, Radha Krishna, and put some money in the donation box. We don't want that. Bhagwan ke Vigraha is not a commercial business. That you put a building, you put Radha Krishna in the building, now the money will come. Churches and temples is not commercial, cannot be commercial. It is the center for spiritual enlightenment. It cannot be commercial. Unfortunately, there are places where Radha Krishna's deities are changed once a week. Probably done 1 aarti or 2 aartis in a day out of 6. Who offered bhoga just once a day. Sometimes when we hear such deities, we feel like rescuing them. Like I feel like rescuing them. Preaching cannot happen by opening thousands of buildings and no devotees. Preaching will happen by having thousands of devotees. The temples will automatically come. Having qualitative devotees. Under the name of preaching, we cannot water down everything. Siddhanta sab water down karo. Sab kuch. Oh, you cannot chant on beads? There is purport over here in this particular Madhavendra Puri's pastimes. Prabhupada is saying it is extremely important to chant on beads.
माला के ऊपर जप करना, 16 माला बहुत आवश्यकता है. Because until unless your hand is fractured or something, that's a completely different story. Generally speaking, माला पे जप करना आवश्यकता है. Anyone who deviates from the principle of Srila Prabhupada is no longer a bona fide spiritual master. Please, without a doubt, know this thing. You're no longer obliged to listen to them. No longer obliged. Yeah, for formality, if they have some positions, accept it. But once they have repeatedly showed that they are not aligned with Srila Prabhupada, you don't have to. You don't have to listen to them. Prabhupada has clearly said, I'm a bona fide spiritual master. Special letter to Nandarani, 29th October 1967. I am a bona fide teacher as long as I follow the instructions of my spiritual master. That is the only one qualification of becoming a teacher. As soon as one deviates from this principle, one is no longer a teacher. One is no longer a teacher. There is a letter. Prabhupada's qualification was asked by Nityananda Prabhu, one of his disciples, dated November 12th, 1979. So as far as my qualification are concerned, I am simply trying to carry out the order of my spiritual master. I am successful in my teaching work because I have not deviated. See, again and again, this is the letter to Brahaspati Das, November 17th, 1971. Listen, please. I am successful in my teaching work because I have not deviated 1 inch from my spiritual master's instructions. This is my only qualification. So if you simply remain pure, your preaching will have effect. Your preaching will. You don't need to have mundaners. Many times people say, oh, you need to encourage people by letting them cook. Let them cook for the deities. That's not encouragement. No, that is not encouragement. What is the standard? Brahmanas initiated. Matlab, you have done 16 rounds of chanting, you follow regulative principles, and you're initiated in the parampara. Then you're qualified for cooking for the deities. Still, we allow 16 rounds chanters, right? Proper cooking, 16 round chanters kar sakte hain. It is very important. It's okay if we were not able to cook for thousands of people. It's okay because I have heard centers where they have arranged pizzas for program. From pizza from pizza. It's better to just give them Charanamrita than giving such food. The spiritual master accepts the sinful activities of his disciples from the first initiation. I may give initiation very easily, but what can I do? I am prepared to go to hell for the service of the Lord Chaitanya. Who is saying this? Prabhupada is saying this to who? Jadurani Mataji, 4th September 1972, in the letter. The Guru gives all credit to his Guru. So many a times we see lots and lots of, welcome back. Many times we see lots and lots of Gurus who hesitate to give credit to their Gurus. They will never ever talk about their Gurus. If they will talk, then it will be completely deviation from what the Guru spoke. Never accept such Gurus. Never ever accept such Gurus. I'll give you an example. Personally, I have no credit. Personally, I am non-entity. I have come here on the order of my spiritual master, and he has kindly sent all you boys to assist me. So whatever is being done, there is no credit for me, but all the credit goes to my spiritual master because he has arranged everything, and I am simply to abide by his order.
abide by his order and not deviate. The pressure will be high. I'm telling you that. People will come with varieties of excuses. Maya is very strong. So Maya will come in varieties of forms to make you deviate from the principles of Srila Prabhupada. No matter how not cool you are, not fanatic you are, it's a tendency. See, if I'm not able to follow certain thing, if someone else is able to follow them strictly, I cannot follow it, but to make myself look perfect, I have to label them as fanatic. I have to. Otherwise, how people will find me perfect? Hey, ki nahi? I have to label them as fanatic. If you are following sincerely, trying to follow, don't judge. See, what is fanaticism is, you are not eating outside food because you want to eat Krishna Prasad. But you're really demeaning and blaming and completely destroying other person who is yet not at that level, that is not able to completely avoid outside food, and judging him. That is fanaticism. Be strict with yourself. And for being strict with yourself and speaking the strict principles that Prabhupada has given as a standard, if people call you fanatic, understand that they are a big losers because they cannot follow it. You are trying to follow it, hence they want to bring you down by showing that you're fanatic. This sincerity will take you back to Godhead. Impressing those people who are calling you fanatic and then you're not being sincere is not going to take you back to Godhead, to Krishna. Don't worry about impressing anyone. Worry about impressing Srila Prabhupada. Only worry about impressing Guru and Gauranga. Srila Prabhupada, that's all. And the representative, genuine. When I say representative, I'm saying genuine representative of Srila Prabhupada who are not deviating from Prabhupada's instructions.